Hello and welcome to Rajya Sabha TV watching Question Hour, a unique show where we get to the questions asked by the members in the upper house and the replies given by the ministries and the departments. I'm your host Rajat Kain, joined with my colleague Kriti Mishra. Thank you so much, Rajat, and we hope that all our viewers are keeping safe and taking good care of themselves. Well, Question Hour happens to be an essential part of parliamentary democracy where governments exercises the information as to what they have done for common public and ordinary citizens through their ministries, through the various schemes and initiatives. Now, broadly speaking, there are three categories of question. First, start, second, unstart, and thirdly, short notice. Now, start are the ones where replies given directly on the floor of the House. And unstart questions are those questions of which replies are given by the government in written format. And our show focuses on all the important unstart questions asked by the members of the upper house and replies given by the government. So, Rajat, let's begin the show. Well, starting the show, first question was asked by member Sampatiya Uikey, and the member asked from Ministry of Health and Family Welfare about number of cancer patients. Is it increasing in the country every year? And what are the details of the number of cancer patients increased in last 3 years? And what are the details of improvements made in condition of government hospitals for the treatment of cancer during last 3 years? And responding to this extremely important query, the government says that as per National Cancer Registry Program of Indian Council of Medical Research, the estimated incidence of cancer cases reported in the country during the last 3 years, that is 2016, 17 and 18. That's estimated incidence of cancer cases in the year 2016 was 14.51 lakh. In the year 2017 was 15.17 lakh, and in the year 2018 it was 15.86 lakhs. Now, government further says that health is a state subject and the central government supplements the efforts of the state governments. Now, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke is being implemented under National Health Mission, the objectives of which include awareness generation for cancer prevention, screening, early detection and referral to an appropriate level institution for treatment. For cancer, the focus is on 3 cancers, namely breast, cervical and oral. To tackle the challenge of non-communicable diseases, including cancer, 616 NCD clinics at district level and 3,827 NCD clinics at community level center level has been set up under the program. Now, population level initiative for prevention, control and screening of common NCDs, that is diabetes, hypertension and common cancers like oral, breast or cervical cancer, has also been rolled out under the National Health Mission in over 215 districts. Screening of common NCDs, including 3 common cancers, oral, breast and cervical, is also an integral part of service delivery under Ayushman Bharat Health and Wellness Centers. And joining us on the Question Hour show is member of Rajya Sabha, Mrs. Sampatiya Uikey, who asked this very important question. Ma'am, welcome to Rajya Sabha TV and thank you so much for joining us. मैम, जैसा आप जानती हैं कि हम इस शो में जो राज्यसभा के सदस्य सवाल करते हैं सरकार से, अतारांकित प्रश्न जो होते हैं उनको उठाते हैं। आपने पिछले सत्र में कैंसर के बारे में पूछा था, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या मत है आपका सरकार के जवाब पर? मैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रह रही हूँ और ऐसी स्थिति में कैंसर की समस्या हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की ये समस्या है। और कहीं ना कहीं हम अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लगातार हम जान पा रहे हैं कि पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी एक सर्वव्यापी खतरे के समान एक मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में मेरी जब पिछले सत्र में मैं जब ये क्वेश्चन की थी तो सरकार ने बहुत ही अच्छे जवाब दिया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को कि जिन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चिंतित रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए, हर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई हैं, उसमें एक सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार प्रयोगशालाएं निरंतर खोल माध्यम से और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे एजेंसी हैं जो लगातार इसमें सर्वे कर रहे हैं और इसके लिए क्या अच्छा उपाय हो सकेगा
उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आयुष्मान भारत के तहत पे 10 करोड़ आबादी के ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने इलाज मुफ्त में 5 लाख तक के इलाज के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई हैं। उसके लिए लोग भी, पूरे देश के लोग उसमें बेनिफिट उठा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं तो चूंकि आदिवासी महिला हूँ और इसके साथ साथ मैं लगातार जनता के बीच में, गांव में और उस वर्ग के बीच में जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, ऐसे समाज के बीच में लगातार रहती हूँ। और जिस तरह से उनके तीज त्योहार में खान पान के कारण, अनबैलेंस होने के कारण जो बीमारियां फैलती हैं, कैंसर जैसी बीमारी, तो मैं भी खुद चाह रही हूँ कि जहाँ पे अशिक्षा की कमी है वहाँ पे हम लोग क्षेत्र में जाकर के लगातार उनमें जागरूकता फैला रहे हैं। और मैं तो हर हमारे एनजीओ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे भैया बहने हैं, उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आदमी, हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होनी चाहिए। और जिस तरह से सरकारें, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हों या हमारे अन्य राज्यों के भी जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जो योजनाएं बनाती हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, उनका लगातार उनसे मिलकर के, उनको समझ करके उसका लाभ लें और अपना स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। उसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2014 से अपने बागडोर, देश की बागडोर संभाले हैं, तब से वो लगातार हम बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत पे भी एक बहुत अच्छा योजना संचालित किए हैं, जिसके चलते 8 करोड़ से ज्यादा हमने गैस सिलेंडर देने का काम किए हैं। निश्चित ही ये योजनाएं बहुत अच्छी है और कैंसर से रिलेटेड है। जिस तरह से हमारी बहनें जंगल में जाती थी, सिर में लकड़ी लेकर के आती थी और घर में परिवार वालों को खाना बना करके चूल्हे में खाना बनाती थी, तो जो धुआं होती थी, तो वो धुएं के कारण हमारी बहनों को भी बहुत सी बीमारियां ऐसी उत्पन्न होते थे, जिसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बहनों का भी ख्याल रखा, उन परिवारों का भी ख्याल रखा और ये योजनाओं को बहुत ही सफलतापूर्वक ये संचालित किए। और जैसे मैं देख पाती हूँ कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को हो रही है और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी ये अभी देखने को भी मिल रहा है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि अभी खान पान, जिस तरीका से लोगों की लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है और उसके कारण से आज हमारे किसान बंधु भी जब वो खेती करते हैं तो खेती में डीपी है, डीपीटी है, यूरिया है, ऐसे खतरनाक खाद को डालते हैं। मैं तो सभी से आग्रह निवेदन करती हूँ कि चाहे वो फसल में हो या सब्जी में हो या हमारे खान पान में हो, ये चीज का उपयोग ना हो तो निश्चित ही अच्छा जैविक खाद डालें, नीम कोट की खाद डालें। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने उद्बोधन में कहते हैं कि वो जैविक खेती को बढ़ाने के लिए लगातार वो प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं तो उसको हमारे किसान बंधु और जो फसल उगाते हैं, जो हमारे सब्जी की धंधा करते हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो कम से कम यूरिया का इस्तेमाल करें। आज हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उसमें लगातार ये डीपीटी यूरिया के कारण आज फसल अच्छा हो, इसके कारण हमको उत्पादन अच्छा मिले, इसके कारण लगातार डाले, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि जमीन की भू स्तर भी आज जहरीला हो गई और वो जो जल की स्तर है वो धीरे धीरे जहरीले होने के कारण से आज वहाँ की ये स्थिति है कि वहाँ के सरकारों को आज कैंसर ट्रेन राजस्थान में चलाने की जरूरत पड़ गई और हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में आज वो कैंसर ट्रेन में मरीज जा रहे हैं राजस्थान और वहाँ पे इलाज करा रहे हैं। और ऐसे ही स्थिति यदि रही तो निश्चित ही हम सब लोग भी देख रहे हैं कि आगे चल करके क्या स्थिति बनेगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार अपने काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में हमारे समाज के भैया बहनों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और हमारे समाज के भैया बहनों भी यदि जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि ये कैंसर तो क्या, हर प्रकार की बीमारी इस देश से दूर जाएगी, ऐसा मैं बताना चाहूंगी। उसके साथ साथ आज हम सब भी देख रहे होंगे कि ये जो
हम जहरीली खाद्यान्न हो या हम जहरीली सब्जियां हो, ये सब चीजें खा रहे हैं, जिसके कारण से आज चाहे वो डायबिटीज हो या कैंसर हो या हर प्रकार की बीमारी हम लगातार देख रहे हैं। और जो लोगों का दिनचर्या है उसमें भी चेंज हो गई। दिनचर्या यदि हम ठीक रखें, हमारा टाइम टेबल यदि ठीक रखेंगे तो निश्चित ही हमको कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं तो पूरे देश के आम जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज हमारे खान पान और हमारी जीवन शैली यदि ठीक रहेगी, हम अपने आप के लिए भी यदि समय निकालेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो निश्चित ही अच्छा हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही हमारे देश का ढांचा भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा मजबूत रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। जिस तरह से अभी देखने को मिल रही है कि चाहे वो गांव में हो, चाहे शहरों में हो, महानगरों में हो, कहीं भी देखें हम, तो कैंसर की यदि अस्पताल में हम जाकर के देखते हैं तो इतनी संख्या में आज हमारे पेशेंट मिल रहे हैं। लगातार सरकार तो कर रहे हैं, पर सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक हमारे आम जनता जनार्दन और आम पब्लिक के सहयोग यदि सरकार को नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं देश की जनता से पूछना चाह रही हूँ कि वो अपने खुद के प्रति कितना सजग हैं और वो कितने चिंतित हैं। मैं आज के भागते दौड़ते दुनिया इतनी ज्यादा व्यस्त होने के बावजूद भी खुद को भी समय दें। यदि वो खुद के लिए यदि समय देंगे तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि वो स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छा रहेंगे। सजग रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आप हमसे जुड़ी, आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लॉट्स मोर ऑन द अदर साइड। Welcome back. You're watching the Question Hour show on Rajya Sabha TV. And moving on to the next question asked by member Sampatiya Chhatrapati, and this question pertains to the Ministry of Commerce and Industry. And the member has asked the government about the reasons that India could not come within first 50 countries in the World Bank rankings of ease of doing business, and also whether the government has identified reforms on a priority basis during the year 2021. Replying to query, the ministry said that in the latest Doing Business Report 2020 released by World Bank on 24th October 2019, India stands at 63rd position out of 190 countries, registering a jump of 14 places from its last year's rank. Now, India has improved its rank in 7 out of 10 indicators and has moved closer to international best practices. The Doing Business Report 2020 acknowledges India as one of the top 10 improvers, third time in a row. India's rank has improved from 142 in 2014 to 63 in 2019, registering a jump of 79 ranks in the last 5 years. The improvement in ranking is a continuous process, and Department of Promotion of Industry and Internal Trade is closely working with the concerned ministries and departments and Government of Maharashtra and NCT of Delhi to implement the reforms and improve India's rankings. Now, DPIIT, that is Department of Promotion of Industry and Internal Trade, prepared an action plan for Doing Business Report 2021, identifying all indicator-wise reforms along with the timeline for implementation, and circulated the same to all the concerned ministries, departments, states, agencies for their implementation. Now, reforms have been identified in the areas of registration of new business, grant of construction permits, grant of new electricity connections, registration of immovable property purchased, facilitating faster international trade, faster disposal of commercial cases, resolving insolvency and implementation of international best practices. Now, further workshops on some of the indicators were organized by the department in coordination with World Bank team to understand the area that require more attention. A number of outreach activities and stakeholders consultations have been undertaken by Department of Promotion of Industry and Internal Trade and all nodal agencies, ministries and departments. Well, moving on to the next question that was asked by member Dr. Banda Prakash from Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The member asked whether the government has launched a pilot program for promotion of nutri farming and introducing new crop variety that are rich in micronutrients.
Responding to this query, the government says that a pilot program on Nutri Farms, a sub-scheme of Rashtriya Krishi Vikas Yojana, was launched in the year 2013-14 to promote cultivation of new crop varieties, biofortified varieties enriched with critical micronutrients such as iron-rich bajra, protein-rich maize and zinc-rich wheat and other crops to improve the nutritional status of the people of the country. Subsequently, this program was subsumed under existing National Food Security Mission during the year 2014-15. Now, under NFSM, 10% of the frontline demonstrations or as per availability of seeds of biofortified varieties of rice, wheat, pulses, coarse cereals and nutri-cereals are being conducted through various institutions of Indian Council of Agricultural Research. In addition, the states are also organizing cluster demonstrations on various food crops, under which they have been given liberty to organize the demonstrations on these biofortified varieties. The Government of India also allocates the funds to the states or ICAR institutions for NFSM program as a whole, including the allocation of organizing demonstrations on biofortified varieties of various food crops. And the total amount allocated under NFSM during the year 2019-20 was 2,364.32 crores. And moving on to the last question of this edition of the Question Hour show that has been asked by member Prabhakar Reddy Vemi Reddy. And this question pertains to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. And the member has asked about the piling cases in the National Consumer Distress Redressal Commission and also whether the ministry would give advisory to all departments of PSUs not to appeal in cases of petty fines. Well, replying to this very important query, the ministry said that petty cases is not defined in Consumer Protection Act 1986. Now, in terms of Section 11 of Consumer Protection Act 1986, the cases where the value of goods or services and the compensation of any claim doesn't exceed rupees 20 lakh are to be filed in District Consumer Disputes Redressal Fora. Now, from jurisdiction point of view, every matter, irrespective of its value, has to be decided on its merits in terms of provisions of Consumer Protection Act 1986. Now, as per the information received from all states commission, total 670 posts of presidents and members of consumer fora are lying vacant. Out of 1 post of president and 11 posts of members in National Consumers Dispute Redressal Commission, at present 4 posts of members are vacant. Now, vacancy circular for filling up these posts have already been issued by the central government with last date of receiving application as 30th of March 2020. Furthermore, under provisions of the Consumer Protection Act 1986, state governments are required to fill up the vacancies of president and members in the state commission and district fora. The central government keep advising the state governments and union territories from time to time to initiate action for filling up the vacancies well in time. Well, that's it in this edition of Question Hour. Keep watching Rajya Sabha TV for more. Take care and stay safe.